Unit 12, Amines Physical Properties. Good morning, students. We are studying Unit 12. In last lecture, we have learned what amines are, how these are classified as primary, secondary, and tertiary amines, then their methods of preparation. We discussed 7 methods to prepare amines, and now in this lecture we are going to study about their physical properties first, then we shall move into chemical properties. First of all, let us discuss their physical properties. Lower amines are gases. Primary amines having up to 3 carbon atoms are gases, and they have fishy smell. Fishy smell, they are smelling like fish. It is actually a foul smell. Uh, Lower amines have this. They are gases. And amines, primary amines having more than 3 C atoms, they are liquids. And still higher amines and secondary, tertiary amines are mostly solids. Higher amines don't have any smell because with increase in molecular mass, their boiling points increase, their process of vaporization becomes very low. That's why they don't smell anything. But lower amines have fishy smell. Then aniline and other aromatic amines, aryl amines, they are actually colorless. But when these are kept in air, these get tarnished. These develop some yellowish color. And important chemical properties about their boiling points and about their solubility. Boiling points of amines are higher than hydrocarbons of comparable molecular masses. Why? Because there is nitrogen. Nitrogen is a highly electronegative atom, and H atom is there on nitrogen. When H atom is present on some electronegative atom like fluorine, oxygen, and nitrogen, then that becomes acidic H, and that develops H bondings. So amines have intermolecular H bondings, due to which their boiling points are higher than alkanes or alkenes or alkynes hydrocarbons of comparable molecular masses. Let us see how. This is a primary amine, and these H atoms can develop intermolecular H bonding with N atom of other amine molecule. Similarly, this one. Okay, so these are H bondings. Now, if we talk about secondary amine means two H atom of ammonia are replaced by hydrogen. Secondary amine will be like this: Rn. This is also R. Two alkyl radicals. Only one. There is only one acidic H. For example, this has two acidic H, primary amine. Secondary has only one acidic H. Only this H will be involved in H bonding. In primary amines, two H atoms are involved in H bonding. So you can easily conclude that melting boiling points of primary amines will be higher than secondary amines of comparable masses, due to this reason, because these have double the number of H bondings due to two acidic H. Here there is only one acidic H. Okay. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको सेकेंडरी में कर देंगे R बन जाएगा, तो ये H बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट tertiary amine does not have any acidic H.
है ना। तो टर्शियरी अमीन में एच बॉन्डिंग नहीं होती। टर्शियरी अमीन के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग्स नहीं बना सकते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी एसिडिक एच। एच एटम तो हैं बट वो आर के कार्बन पे हैं, एन के ऊपर डायरेक्टली नहीं है, तो एच बॉन्डिंग की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स हों कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास की, उनको सेपरेट करना हो तो यू कैन डू दिस बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि तीनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। सबसे हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाईएस्ट तीनों में से होगा प्राइमरी अमीन का, और लोएस्ट होगा वो टर्शियरी अमीन का होगा। ओके, now let us talk about their solubility in water. Amines are fairly soluble in water if we give a general statement. But if we go deeply into this, then we can say that primary amines are more soluble in water than secondary amines. Why? Again, same thing. Primary amines have two acidic H atoms which can form H bonding with H2O molecules, water molecules. ओके, वाटर का ये H N के साथ, अमोनिया का H इसके O के साथ, तो इंटरमोलिकुलर वाटर और प्राइमरी मीन के मॉलिक्यूल्स इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, सेकेंडरी मीन के केस में एक ही एसिडिक H है, तो यही वाटर के O के साथ इन्वॉल्व होएगा, H बॉन्डिंग्स कम होएगी। सो secondary amines are less soluble in water than primary amines. And if we talk about tertiary amine, see here, are tertiary amines soluble in water? No, not at all. Why? No acidic H, no H bonding can be formed with the H2O molecules. Okay, so these are some important physical properties of amines which are important from the examination point of view. Now let us move into chemical properties of amines. If we talk about chemical properties, then the most important chemical property of amines is their basic character. Basic nature or basic character or basicity, basic strength, whatever you say. Amines, all amines, primary amine, secondary amine, tertiary amine, ammonia and aniline, all are basic in nature. Why? Because there is a lone pair of electrons on an atom, and according to Lewis' concept of acids and bases, a species which has lone pair of electrons can donate this lone pair to electron deficient species, and such species are called Lewis bases. तो जो स्पीसीज लोन पेयर रखती है उसको डोनेट कर सकती है, वो लुईस का बेस है, और जो स्पीसीज लोन पेयर एक्सेप्ट करती है वो लुईस का एसिड। तो हमने देखा कि अमीन्स में, अमोनिया में भी, एनिलीन में भी इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, तो जिसको ये डोनेट कर सकते हैं। आई एम टेकिंग दिस प्राइमरी अमीन, दिस इज लोन पेयर, तो इसको डोनेट किया जा सकता है किसी भी लुईस एसिड को। सो दीज आर बेसिक। सिमिलरली aniline also has lone pair of electron. ओके, तो कोई ऐसे सपोज हम इसमें कर देते हैं कोई एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, what will happen? H positive Cl negative
H पॉजिटिव इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, सो दिस इज RNH3 प्लस अमीन आयन बन गया, और साथ में क्या बन गया, Cl नेगेटिव, अट्रैक्शन ड्यू टू अट्रैक्शन, ये साथ रहेंगे तो ये साल्ट बन गया। ओके, product of acid and base is called salt. This is acid, this is base. Similarly, here also NH3 positive and Cl negative. This is aniline chloride. So this is also a salt. Okay. तो अब इसको सेकेंडरी अमीन कर दोगे, R के प्लेस पे एक और H के प्लेस पे एक और R आ जाएगा, एक H रिप्लेस करके टर्शरी करोगे ये दोनों ही R हो जाएंगे, लेकिन लॉन पेयर तो N के ऊपर ही रहेगा ना। तो इसलिए प्राइमरी अमीन हो, सेकेंडरी अमीन हो, टर्शरी अमीन हो, अमोनिया हो, एनिलीन हो, कोई और एराइल अमीन हो, एनिलीन का डेरिवेटिव हो, दीज ऑल आर बेसिक इन nature. Okay, now here very important situation arises when we talk about relative basic strength of amines, ammonia and aniline. If we generally talk, we can say that secondary amines are most basic and aniline is least basic. यानी secondary amines are most comfortable in donating their lone pair of electrons, and aniline is least basic, means it is not interested, it is very less interested in donating its lone pair. Now question arises, why? Because there are many factors which we shall discuss, okay, and on the basis of those factors we will conclude that why is there such order. And there are many discrepancies also. First of all, let me explain you how basic strength is measured. Basic strength is measured in terms of basicity constant Kb or in terms of pKb, power of basic constant. Let me remind you little bit from your 11th class syllabus. For example, we are taking this reaction. Actually, most reactions are reversible. When amine is acting as a base, that means it is donating lone pair to electron deficient species. Let us take primary amine and butter. Lone pair is donated to H plus, RNH3 positive and OH negative. But the process is reversible. Most reactions are reversible. तो जब भी इक्विलिब्रियम आ जाता है, आपको याद होगा 11th क्लास का काम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, इस सिस्टम का फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये बेस है हम इसको के भी बोल देते हैं। के बी इज इक्वल टू राइट साइड की टर्म्स का प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन इनका प्रोडक्ट OH नेगेटिव अपॉन लेफ्ट साइड की टर्म्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। जब ये वैल्यूज पुट करके हम कंसंट्रेशन की सॉल्व करते हैं, देन वी गेट वैल्यू फॉर Kb. Kb is called dissociation constant of base. जितना Kb की वैल्यू हायर है, इट मीन्स वो सब्सटेंस उतनी ज़्यादा बेसिक है। अगर किसी बेस का Kb की वैल्यू 2.1 है, दूसरे की 3.5 है, तो ऑब्वियसली 3.5 Kb वाला ज़्यादा बेसिक है। ओके, नाउ एक चीज़ होती है पी के बी क्या होती है?
पी के बी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। जैसे आपको याद होगा हम 11th में पीएच स्केल पढ़ते थे। पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। इन सिमिलर मैनर पी के बी क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। अब आप समझ सकते हो कि इफ वैल्यू ऑफ के बी इज हायर, पी के बी विल बी लेसर बिकॉज नेगेटिव है और लॉग है। जितना के बी हायर होगा उतना पी के बी लोअर होगा। अगर दो बेसिस को कंपेयर कर रहे हो, बेस 1 बेस 2, ठीक है, अगर के बी की वैल्यूज दी हुई है, इसका के बी 2 है, इसका के बी 3 है, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा? 3 वाला। बट इफ यू आर गिवन द वैल्यूज ऑफ पी के बी, इसका पी के बी 7.1 है, इसका पी के बी 6.5 है, फिर ज्यादा बेसिक कौन होगा? जिसका पी के बी कम है, 6.5। अगर के बी हायर होगा तो पी के बी लेसर होगा एंड वाइस वर्सा। तो आपकी बुक्स में टेबल दिए होते हैं, कंपेयर करते हैं वो डिफरेंट अमीन्स को, एनिलीन को, अमोनिया को, उनके के बी की वैल्यूज या पी के बी की वैल्यू दी होती है। अगर के बी दिया है तो हायर के बी वाला ज़्यादा बेसिक, अगर पी के बी दिया है तो लेसर पी के बी वाला ज़्यादा बेसिक। ओके, सो दिस इज इट। तो अब हम डिस्कस करते हैं वो फैक्टर्स जो अमीन्स की बेसिक नेचर को इफेक्ट करते हैं। सो देयर आर 3 फैक्टर्स। First factor is inductive effect. Second factor is steric hindrance. And the third factor is solvation, or you can say hydration of ions. तो अगर हम एलिफेटिक अमीन्स को कंपेयर कर रहे हैं, एलिफेटिक मीन्स जिनमें बेंजीन की रिंग नहीं है, ठीक, तो उनमें तो हम ये 3 फैक्टर्स अप्लाई करेंगे। बट इन केस ऑफ एनिलीन हम एक फैक्टर और यूज करेंगे विच इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। क्योंकि जहां भी बेंजीन रिंग आ जाती है तो बेंजीन में कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस उसमें हो जाती है। तो फिर आपको पता है जो एन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये फैक्टर हम एक्सक्लूसिवली एनिलीन में करेंगे। ये 3 हम अमोनिया में और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, कौन सी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक है, कौन सी सबसे कम। ओके, सो दिस वी शैल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, तो रिवाइज इट फ्रॉम योर बुक्स आल्सो। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।